Hello everyone, welcome to my channel Param Electronics. So let us start with some previous year questions of a GATE exam and the topic is the network theory. So let us discuss some of the basics of the network theory questions which are the part of the previous year questions 2025, 2024 and 2023. सो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम द गेट 2025 में ये क्वेश्चन आया था व्हाट इज द कंसीडर अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एज शोन बिलो सम नोड वोल्टेजेस एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द 3 ohm resistor are as indicated the voltage in volts at the node x is given. हमारे पास एक नेटवर्क गिवन है, कुछ यहाँ पर वोल्टेज गिवन है, कुछ करंट गिवन है, ठीक है जी, रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर एक्स वोल्ट जो एक्स पॉइंट है यहाँ पर हमने वोल्टेज जो है कैलकुलेट करनी है। सो व्हाट आर दी बेसिकली स्टेप्स आर देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी एज्यूम हियर अ पॉइंट ए, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट ए एज्यूम करेंगे। सो नाउ वोल्टेज एट नोड ए, सबसे पहले जो हमारी वोल्टेज है वी ए पे कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज़ द रीज़न, बेसिकली हमने यहाँ पर वोल्टेज निकालनी है। इसका मतलब यहाँ पर अगर हमें हमारे पास करंट आ जाएगा तो यहाँ पर भी हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेशन पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पर देखिए 8 वोल्ट है, यहाँ पर 9 वोल्ट है, तो तकरीबन अगर यहाँ से शुरुआत करेंगे तो हमारा आंसर आ सकता है। सो वी ए इज इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे करंट यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ वोल्टेज है 9। सो यहाँ कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी हुआ है 3 ओम पे ऊपर, ठीक है, माइनस करेंगे 3 आई आर लिखेंगे। सो आर की वैल्यू 3 है और आई की वैल्यू यहाँ पर है 1, तो हमारे पास आ जाएगा -3 और वी ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 वोल्ट, ठीक है जी। सो नाउ 10 आई नोट की वैल्यू हमने निकालनी, ठीक है। सपोज करेंगे यहाँ पर जो करंट जा रहा है वो एक आई नॉट है, ठीक है, तभी हम वोल्टेज निकालेंगे अगर हमारे पास करंट अवेलेबल होगा। सो आई नॉट इज इक्वल टू, सो सी 8 वोल्ट से लेके यहाँ तक जा रहा है, यहाँ पर हमारे पास आ गई है दैट इज 6 वोल्ट। सो 8 माइनस 6, सॉरी हाँ जी -6, कितने रास्ते में रेजिस्टेंस बढ़ रहे हैं 2 और 1, ये दोनों आपस में सीरीज में है। सो 2 + 1, सो बेसिकली इट इज इक्वल टू 2/3 एम्पियर। ओके, सो नाउ वोल्टेज एट एक्स पॉइंट वी एक्स, यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट करना है यही की हमारा क्वेश्चन है, ठीक है जी। सो यहाँ पर होगी 8 माइनस यहाँ पर जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ बाकी यहाँ पर ये पेयर होगा, यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज आई नॉट करंट जा रहा है, साथ ही रेजिस्टेंस आर, ठीक है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है तो वोल्टेज ड्रॉप आई आर। सो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा तकरीबन 8 माइनस 4 इंटू 3, सो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 4 और 3। सो वी एक्स बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 20/3 वोल्ट। सो दिस इज बेसिकली आवर आंसर। So the step is, first of all assume A node, calculate the A voltage, then you have to calculate current, then next step you have to calculate voltage. So first of all calculate the current, that is I naught is equal to 8 minus x, oh sorry VA is equal to 6 and 8 minus 6 over 2 plus 1, so 2/3, and what is the Vx, that is 8 minus voltage drop here, that is I, that is 2/3 into 2, 4/3, and the answer is 20/3 volt. Okay, so now move to the next previous year question from 2024. So this is the question. So basically the given circuit, calculate the current Ix, this one we have to calculate and in a milliampere. So what are the basically steps for this?
सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द पिक्चर क्लियरली, डायग्राम को अच्छे से देखो. सो जब आप डायग्राम को अच्छे से देखेंगे तो क्या आएगा आपके पास. सो इट इज़ बेसिकली दिस सोर्स इज कनेक्टेड बिटवीन टू nodes. So basically this, suppose we have to assume V1 and V2. Okay, so rest of current are same. So V1 and V2 form a super node applying. Now what we have to do, applying KCL, Kirchhoff करंट लॉ अप्लाई करेंगे at V1 and V2 gives. सो यहाँ पर हम KCL करेंगे. KCL में कितना इनकमिंग करंट आ रहा है और कितना आउटगोइंग करंट. सो लेट अस सी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल this current we have to calculate, that is at a V1 V over 10 raised to power 3. So this one is 10 raised to power 3. Now plus V2, that is again 1 into 10 raised to power 3 plus 2 milliampere, because these are current basically. These some current, okay. And then next is also this one flowed this branch, so we have to add it 2 milliampere, that is 2 10 raised to power minus 3, and which is, so these are basically flow downwards and this upwards. So this a whole current is equal to this one, so is equal to 5 into 10 raised to power minus 3. So here I naught, this one I naught, okay, which is equal to V1, because this one is a reference node equal to ground. So V1 minus 0 or divided by resistor, that is 10 raised to power 3. And also another one is this one. So basically this is a voltage drop and its value is 1000 I naught. So basically V2 minus V1 is equal to this one, V2 minus V1 is equal to 10 raised to power, because there are 1000, 10 raised to power 3 I naught. Now the I naught is 10 raised to power 3 into V1 and over 10 raised to power 3. Okay. So which is equal to, this one is cancel out, this is V1. So V2 is equal to, this move toward this side, which is equal to 2V1. Okay, now the V1 is equal to V2 over 2. So this is equation number 2 and this is equation number 1. Okay, now put it in equation number 1. So when we put, so V1 is equal to V2 by 2. Now see, this is, here is a 10 raised to power 3, 10 raised to power 3, here is 10 raised to power minus 3. So we can write like this way. Two into 10 raised to power minus 3, 10 raised to power minus 3. So 10 raised to power is common, cancel out, which is equal to V1, V2. Now these two move toward this, it become 5 minus 2 is equal to 3. Now V1 is equal to V2 by 2 over E2 3. Okay.
So 2 multiply here. So V2 is equal to 6, and this is 3V2 6. So V2 is equal to 6 by 3, that is equal to 2 volt, and Ix equal to V2 by 10 raised to power 3. So 1 raised to 2 10 raised to power 3, which is equal to 2 into minus 3. So the Ix will become 2 milliampere. So this is the answer. So see the steps. So basically you have to see the whole diagram in a proper way. This is a super node. So you have to apply a KCL V1 and V2. Basically you have to write down the current value. I have current write the value of the current in terms of voltage. That is V1 over 10 raised to power 3, V2 over 10 raised to power 3, and this 2 milliampere is also the whole current again is equal to 5 milliampere. Now the I2 is equal to V1 by 10 raised to power 3. Okay, so this one. Okay, so we know this one. See there, 10 raised to power 3 into I2 is equal to V2 minus V1. Okay, so when the I2 value we have to put, the answer become V1. So here V2 is equal to 2V1 and V1 is equal to V2 by 2. Equation number 2, equation number 1, put this one in this equation. So first of all you have to eliminate 10 raised to power 3 like this way. Then equation 1 becomes V1 plus V2 is equal to 3. Put the value of V1, that is V2 by 2, and your V2 answer will become V2 by 6 by 3. V2 is equal to 2 volt. Then Ix is V2 by 10 raised to 3, 2 over 10 raised to power 3, which is equal to 2 into 10 raised to minus 3, and Ix will become 2 milliampere. So now move on towards next question. So the next question. So today we will this only the two questions of 2025 and 2024. So बने रहिए इस चैनल के ऊपर और भी videos related to GATE subject and important topics, and also on the previous year questions I will cover in the next videos. So thank you very much.